Hello everyone, welcome to Tutoratti. I'm Sonal and we are going to continue with our chapter Surface Areas and Volumes. Our today's 3D figure is hemisphere. Fine, so let us quickly go ahead and understand. Now, what do you mean by hemisphere, children? Hemisphere, isn't it? Hemi means half and sphere we all know. So basically, the concept of this figure says half of a given sphere. Fine. So, let us take some examples. Examples can be a half cut line, isn't it? It is a hemisphere. We can also have some bowls which are in the shape of a hemisphere. Fine? Yes or no? Now, let us go ahead and understand how we can represent this hemisphere geometrically with the help of a figure. So, this is my hemisphere. Okay, now let us understand how many faces does it have. So, a hemisphere has two faces. One is the circular face and another is the curved face, the lower one. Okay, so how many faces does a hemisphere has? It has two faces. Now, let us understand that the radius is from here to the end of the circumference and it is represented as small r. Okay, अब let us understand what do you mean by a curved surface area. Curved surface हमको पता है, ठीक है, जो भी curve में है हम उस surface की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर है ना, तो उसका आधा एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पूरे स्फीयर का आधा एरिया, कर्व्ड एरिया है ना. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हमको क्या है? हमको पता है ऑलरेडी, और वो और कुछ नहीं है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर. पूरे स्फीयर का आधा कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर मिलेगा, ठीक है. ये तो था कर्व्ड सरफेस एरिया. बट हम टोटल सरफेस एरिया को कैसे निकालने वाले हैं? तो टोटल सरफेस एरिया में दो चीजें हैं, क्योंकि दो फेसेस हैं, है ना, एक कर्व्ड सरफेस है और एक सर्कुलर फेस है. तो वी विल बी एडिंग द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर फेस इन दिस वैल्यू एंड वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज the addition of curved surface area and the circular face. Fine. So, area of a curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square and area of the circular face is pi r square, है ना. अब ध्यान से देखो यहाँ पे, pi r square 2 and this is actually 1. So, you add this thing and get the total surface area. So, the total surface area of the hemisphere becomes 3 pi r square. Yes or no? Yes children. Very good. दो चीजें मिल गई, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, टोटल सरफेस एरिया मिल गया. अब क्या बचा? कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. लेट्स सी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? सो the volume of hemisphere again is going to be half of my sphere's volume, isn't it? So we know the total volume of a sphere. ठीक है, तो total volume of a sphere क्या है हमारा? What is the total volume, children? Total volume of a sphere is 4 into 3 pi r cube. ये entire value को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा 1/2 into 4 by 3 pi r cube. Ideally, this means this entire value
is divided by 2. Once I simplify this statement, I am going to get the volume of my hemisphere as 2 by 3 pi r cube. Volume is always represented in cube. I am repeating this a number of times so that it gets registered in your mind and you don't make mistakes in the paper. All right? अब ये हो गया हमारा वॉल्यूम. कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, टोटल सरफेस एरिया मिल गया और वॉल्यूम मिल गया. लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व few sums based on this concept. Now, if you observe the question properly, it says that the curved surface area of a hemisphere is 905 1 by 7 centimeter square. Find its volume question mark. If you observe, the values given here is a mixed fraction. It is a mixed fraction. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको. अब हमें कर्व्ड सरफेस से वॉल्यूम तक जाना है. ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन दैट द वे टू सॉल्व द आंसर you will understand only from the given question. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. वापस करेंगे. The curved surface area of a hemisphere is 905 1 by 7 centimeters square. What is its volume? ठीक है, तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? Given. ठीक है, तो हमको क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, उसका एक वैल्यू दिया है. वापस ध्यान से देखेंगे. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू द नॉर्मल फ्रैक्शन. लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू डू दैट. व्हेन आई वांट टू कन्वर्ट दिस, आई नीड टू मल्टीप्लाई माय डिनोमिनेटर विथ माय मेन नंबर एंड add 1 to it, which will again be divided by the denominator. So it is 905 into 7 plus 1. This is the entire numerator divided by 7. Yes, and the unit will be centimeter square. Obviously, we will simplify this statement. So I get a particular value, isn't it? And I keep simplifying that till the time I don't get my final answer. This is my normal number. It's a fraction. 6336 divided by 7 or upon 7 centimeter square is my curved surface area of hemisphere. अब एक बात है बच्चों, या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके यूज करो, या तो आप जैसे ही ये फ्रैक्शन में है वैसे ही यूज करो. आई विल सजेस्ट दैट डोंट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. ठीक है, जब आगे जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे. सो लेट दिस बी लाइक दिस. अब थोड़ा आगे चलते हैं. अब क्या पूछा है? पूछा है उसका वॉल्यूम. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. रिकॉल द फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ हेमिस्फीयर? इट इज 2 by 3 pi r cube. वॉल्यूम इज क्यूब. तो हमने सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, बट उसके पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि r की वैल्यू ढूंढनी है. किसकी वैल्यू ढूंढनी है? r की वैल्यू ढूंढनी है. तो अब उसके लिए हिंट भी चाहिए हमें. तो कैसे करेंगे r की वैल्यू ढूंढना? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला चिल्ड्रन? 2 pi r स्क्वायर. तो इस वैल्यू के सामने इस फॉर्मूला को रखेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? वेरी सिंपल. So I'm just replacing the values here. I'm taking this value. ठीक है? So basically it is 6336 upon 7 will be equal to 2 times pi r square. अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको सिंप्लीफाई करती हूं तो मुझे पाई की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा. पाई का वैल्यू क्या है?
22/7, करेक्ट। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में पाई का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। आर तो हम ढूंढ रहे हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा, हम सारे जो वैल्यूज हैं उसको एक तरफ लेके जाएंगे और आर स्क्वायर को अकेला छोड़ देंगे। तो in that case, if you observe here, I have shifted my 2 and 22/7 on other side. So it becomes this. You remember I told you that don't convert into decimal. See, here it comes to a help. 7 and 7 can easily cancel. Correct? So I just nullify them. Again I start dividing by 2 and I get a smaller number in the numerator. Again 22 can be used for division and I get the answer. R square का value is 144 centimeter square, 144. तो अब क्या करना है, इस R का जो square है we will take it on the other side and it gets converted into root. It becomes the square root and the square root of 144 is 12. So the radius becomes 12 centimeters. So हमने surface area का जो वैल्यू था उसमें से एक फ्रैक्शन बनाया, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आए। फ्रैक्शन जो था उसको हमने फॉर्मूला में इक्वेट किया 2πr² के फॉर्मूला में, विच इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। Once I simplified the statement, I found the value of R. अब R की वैल्यू मिल गई है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट इट इज 2πr³। इस फॉर्मूला के सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास 2/3 है, पाई की वैल्यू है 22/7 और R हमें मिल गया है विच इज 12। Just quickly substitute the values and tell me the answer, children. So it is 2/3 into 22/7 and into 3 times of my R, isn't it? Simply do the cancellations and get the final answer after the multiplication, which is a very big number upon something, right? Now what to do? Now we will do the division here. This time I thought, let me show you how to divide. Just a small recap. So 7 times 3 is going to give me 21 and I'll keep do my division. That is 25 minus 21 will give me 4. I am taking the 3 down. It gives me 43. 7 times 6 gives me 43. No, 7 times 6 gives me 42. Again I'm going to get one remainder, isn't it, children? I'll keep doing my division till the time I get the remainder as 0. But in this case what happens is I have to take a decimal because the remainder here was 4. So I continued my division and I'm taking a 0 and I'm putting a decimal up and 7 5s are 35. Again I get a remainder. So again I have to take one decimal point and go ahead, isn't it? So 7 7s are 49 and I get the answer, the remainder as 1. Now the thing is, again the case is same. Again I have to take one 0 and put it down and this cycle will keep on going. So in such cases what we do is we only divide till 2 decimal points. ठीक है, तो हम इस quotient को अपना आंसर कंसिडर कर लेंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट तक ही जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ माई हेमिस्फीयर बिकम्स 3620.57 सेंटीमीटर्स क्यूब, है ना। पर यहां पे छोड़ देंगे तो क्या होगा पता है, एग्जामिनर हाफ मार्क काट लेगी। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट हमने नहीं किया है। तो टू गेन दैट मार्क्स हमने फाइनल आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और हाईलाइट करना है, ठीक है। सो वी रिप्रेजेंटेड द फाइनल आंसर। सो children, I end my class here about the hemisphere. What I want you to do is you go back and revise all the figures which we have done, starting from the rectangular cuboid, cube,
ठीक है? Then you remember we did cone, we did sphere, and we also did cylinder, and now we have done hemisphere. I want you all to go through all the formulae and write down in a piece of a paper and keep it handy with you for the next class. Clear, children? So you're going to make a paper, you're going to take a paper and you're going to write down all the formulas of curved surface area, volume and total surface area of each and every figure for the future reference. Fine, children? Till that time, please like my video and take care. Bye-bye.